So welcome to all the devotees for this session. So I will try to explain how you can sustain your interest in Krishna conscious practices. ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे हम अपनी रुचि को कृष्ण भावनामृत में अपनी रुचि को कायम रख सकते हैं. Because we are in the neophyte stage or beginning stage called Kanishta Adhikari. In Sanskrit, in the scriptures, it is described the beginning stage of devotional service called Kanishta Adhikari. So अभी हम अपने प्रारंभिक अवस्था में है जो कनिष्ठ अधिकारी कही जाती है शास्त्रों के अनुसार. Kanishta means not nishtha, not fixed up, not steady. So कनिष्ठ का अर्थ है कि जिसमें निष्ठा नहीं या वो स्थिर नहीं है. So how do we come to the stage of nishtha, and what is the reason why we are not experiencing that nishtha? So हम किस तरह से निष्ठा के स्तर पे आ सकते हैं और वो कारण क्या है जिसकी वजह से हम निष्ठा का अनुभव नहीं कर पा रहे. So when we begin devotional service, our heart is full of so many material contaminations. जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हमारा हृदय बहुत सारे भौतिक कर्मों से दूषित रहता है. Now, two kinds of contaminations are there in the heart. One is the sinful reactions from the past. We have done some sinful reactions in the past, and then those reactions are waiting in the heart to fructify. So हमारे हृदय में दो प्रकार के दूषण होते हैं. पहला वो है जो हमारे पूर्ववर्ती पाप कर्म है जो हम अभी वो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. हम प्रतीक्षा नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रतीक्षा काल के अनुसार करना पड़ता है. We are forced to wait for the sinful reactions to suffer. That is one thing. Second thing is our material desires, which we have not fulfilled yet, but we have developed in our association with this material world in the past. और दूसरा दूषण है हमारी भौतिक इच्छाएं जो हमने इस भौतिक संसार के संग में आकर विकसित की हैं लेकिन अभी परिपूर्ण नहीं हुई हैं. So everybody will agree this sinful reaction is actually a contamination, but not everyone will agree material desires are also contamination. So सब लोग ये स्वीकार करेंगे कि हमारे पाप कर्मों के फल तो एक दूषण है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो उसको दूषण नहीं स्वीकार करते. What kind of ichha? Material desires. That is not really very much good in our heart. So ये जो भौतिक इच्छा है ये अच्छी नहीं होती जो हमारे हृदय में इस तरह से स्थित हैं. Because the very material desires are the cause for our material existence and the consequent suffering and separation from Krishna, forgetfulness of Krishna. The material desires are the very cause. So ये भौतिक इच्छा ही कारण है कि हम इस संसार में मतलब इस भौतिक संसार में हैं और हम भगवान से विलग हैं और भगवान को भूल गए. So these material desires for enjoyment is our foolishness, is our big mistake we have done, and we think that material desires which we want to enjoy, I can enjoy independently of Krishna. So हमारी जो भौतिक भोग की इच्छाएं हैं ये हमारा अज्ञान है, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है. हम सोचते हैं कि ये जो हमारी भौतिक भोग की इच्छाएं हैं हम ये भगवान से स्वतंत्र होकर इनका आनंद ले सकते हैं. But our position is we can never be independent of Krishna. Whether we are liberated or we are conditioned, whether in the material world or in the spiritual world, our position is we are very tiny amsha of Krishna
and always dependent 100% on Krishna. चाहे हम मुक्त अवस्था में हो या बद्ध अवस्था में, हम आध्यात्मिक जगत में या भौतिक जगत में, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम भगवान के भौतिक अणु अंश और 100% पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हैं. Just like Prabhupada explains, a small child totally dependent on its mother and father. It cannot ever think of anything like independence. श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि एक छोटा बालक है, वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर है और वो कभी भी स्वतंत्र रूप से रहने का विचार नहीं कर सकता. Not even बालक, शिशु. क्या बोलते हैं? शिशु. छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा जिस जन्म लिया है, उसका अवस्था क्या है? हमारा अवस्था भगवान के अंश होने के कारण वो हमारा अवस्था है. ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा फॉर एवरीथिंग. सो दिस डिपेंडेंस ऑन कृष्णा is what we understand when we properly hear from self-realized spiritual master Prabhupada. What is our actual position? Why are we engaged in so much of struggle for our existence? Because we don't have independence. We want to be independent, but we don't have independence. So ये जो निर्भरता की अवस्था है, ये हम तब समझ सकते हैं जब हम श्री प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक आचार्य के संपर्क में आते हैं. और फिर हमारी सिचुएशन क्या है? हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते, हम पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हैं, अवलंबित हैं, सदा अवलंबित हैं, हर क्षण में अवलंबित हैं. ये समझना चाहिए. Now some people think that may be true when we are small children. When we grow up, gradually we become independent. We stand on our own feet. We develop strength, we develop intelligence, we develop maturity, we develop so many different qualities. So कोई ये सोच सकता है कि निर्भरता तब तक है जब तक हम नन्हे हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें शक्ति आ जाती है, हमें योग्यता आ जाती है, तो हम सक्षम हो जाते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं आ जाती हैं, तो हमें निर्भर होने की क्या आवश्यकता है. But you consider how this body and mind is working. When you read the Bhagavad Gita, study the Bhagavad Gita, you'll understand how this body and mind is working, even in an adult. जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि किस तरह ये शरीर और मन कार्य कर रहे हैं. This body and mind is working only because Krishna is Paramatma in our heart, is actually making every arrangement for this body and mind to work according to our desire. So हमारा शरीर और मन इसलिए कार्यरत है क्योंकि भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है और वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर और मन कार्य कर सके. In one simple verse, Krishna says this: सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो. मैं सबके हृदय में बैठा हूँ. मत्तः, मेरे से ही. स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च. Our remembrance, our forgetfulness, our knowledge, everything is coming from Krishna every moment. So भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सबके हृदय में हैं, उनके द्वारा ही सबको स्मृति, भुलावा और ज्ञान आ रहा है हर क्षण. So, even though we think, I know, I remember, or I can forget, when we are disturbed in the mind about some misery, we cannot forget that. What we want to forget, we cannot forget always. What we have to remember, we can't always remember. Sometimes we don't remember what we should be remembering. And knowledge, obviously we don't have all knowledge of everything. But even whatever little we know, at some time that knowledge will not come of any use. It will be falling short of the real requirement. So हम सोचते हैं कि हम याद रख सकते हैं, हम भूल सकते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है. कभी कोई विपरीत परिस्थिति होती है और हम उसे भूलना चाहते हैं तो भी हम अपने प्रयास से नहीं भूल सकते. और कभी हम कुछ याद करना चाहते हैं तो हम प्रयास करके उसको याद भी नहीं कर सकते.
और जब ज्ञान की बात आती है तो हमारे अंदर निश्चित रूप से सारा ज्ञान नहीं है, सो हमें ज्ञान का अभाव भी है. Whereas our spiritual condition is that we are properly connected with Krishna and we completely depend on Krishna, and Krishna takes full care and supplies everything just like a mother takes care of a very, very, very small child in every respect. So हमारी आध्यात्मिक स्थिति ऐसी है कि हम पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं और भगवान कृष्ण हमारी हर चीज का ध्यान रखते हैं, जैसे एक माता अपने नन्हे शिशु की हर आवश्यकता का ध्यान रखती है. The child is not in a position to ask the mother, I want milk. Mother will feed the milk to the child. At the most, the child, what it can do? It can cry. But that language of the child in the beginning is just crying, but the mother understands. Oh, child is crying because it needs something. And mother will try to understand and somehow comfort the child. So similarly, Prabhupada says, our chanting Hare Krishna should be like the genuine cry of a child for its mother. So एक छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर योग्यता नहीं होती कि वो बोलकर अपनी माता से मांगे. So उसकी माँ उसकी सारी आवश्यकताओं के ध्यान रखती है. अधिकाधिक वो सिर्फ रो सकता है, रोकर अपनी स्थिति व्यक्त कर सकता है, किंतु जब माँ उसका रुदन सुनती है तो फिर वो उसका पूरा ध्यान रखती है. इसी तरह श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारा जो जप है वो इस तरह से एक भगवान के प्रति रुदन के भाव में होना चाहिए. Genuine cry that you're really helpless without Krishna. You have to get convinced about this. And if you study Bhagavad Gita, you'll understand Krishna is actually making everything possible. Every moment. Just like something happens in the brain, the person completely forgets. It's called amnesia. In medical terms, those who are familiar with this medical terminology, amnesia means they forget who they are, they forget who their parents are, what their name is, what their job, everything they forget. Something happens in the brain, and that has to be set right by psychiatric treatment because there's no physical damage there. So it is something to be set right by psychiatric treatment. So हमारा भाव एक असहाय शिशु के वास्तविक रोने के जैसा होना चाहिए. तो जब इस तरह का जब हम इससे आश्वस्त हैं तो फिर भगवान हमें सारी सहायता प्रदान करते हैं. कभी-कभी मेडिकल कंडीशन में एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं एम्नेसिया, जिसमें व्यक्ति जो है उससे ग्रसित व्यक्ति वो सब भूलने लगता है, अपना नाम, अपने परिजनों का नाम, ये सारी चीजें. सो उसके दिमाग को कोई ऐसे क्षति नहीं पहुंची है, केवल उसको भुलावा है. सो जब उसको सही उपचार मिलता है डॉक्टर से तो उसको ठीक किया जा सकता है. Exactly like that psychiatric treatment for an amnesia patient, our forgetfulness of ourself as spirit soul, Atma, who doesn't have death, who doesn't have birth, who doesn't have any rogue or disease or any material miseries, and our actual relationship with Krishna, where Krishna is completely taking care of us and is dependable, only dependable person. This remembrance is possible by chanting Hare Krishna. So जिस प्रकार एक एम्नेसिया के मरीज को एक मनोचिकित्सक के उपचार के द्वारा पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है, उसी तरह हम भुलावे में हैं कि हम भगवान पर आश्रित हैं, भगवान ही हमारे सब कुछ हैं. तो ये chanting Hare Krishna से हम इस स्मृति को वापस ला सकते हैं. So the soul, there is no material touch for the soul. Each one of us is Atma. Just like in the brain, there is no physical injury for amnesia. Similarly, the soul, there is no material contact itself. But we still say it's an infection, material infection. What is that material infection ultimately? It is simply the material desires. That is the material infection. And it doesn't touch the soul. So these material desires have to be cured. This infection of material desires has to be cured. So आत्मा भौतिक दूषण से प्रभावित नहीं होता है.
जैसे एमनीसिया में हम देखते हैं कि दिमाग को कोई क्षति नहीं पहुंची है, केवल भुलावा है। इस तरह आत्मा इन सब चीजों से दूषित नहीं होता है, फिर भी हम कहते हैं कि ये आत्मा जो है वो ग्रस्त है। तो किस तरह से वो ग्रसित है? वो इन भौतिक इच्छाओं से ग्रसित है। So to give up these material desires or purify the material desires, as Prabhupada says, many philosophers, they say, become desireless, then your problems are solved. That's a fact. Our problems will be solved when we become free from all these material desires, become desireless. But we cannot become desireless and live without any desire. That is not possible. So इन भौतिक इच्छाओं से हल पाने के लिए कुछ दार्शनिक कहते हैं कि हमें सारी इच्छाओं को शून्य कर देना चाहिए। अगर हम सारी इच्छाओं को शून्य कर देंगे तो हमारी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, किंतु अपनी इच्छाओं को शून्य करना संभव नहीं है। शून्य कर सकते हैं, लेकिन बिना इच्छा के जी नहीं सकते. This desiring is the fundamental quality or nature of the soul of the living being. इच्छा करना एक आत्मा का जो है मूलभूत लक्षण है. So, if you cannot be without desire, at the same time you should get rid of all your material desires. The bhakti method is to replace those material desires with spiritual desires. So हम इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते, पर उसी समय साथ ही साथ हमें भौतिक इच्छाएं भी नहीं रखनी है. तो इसके लिए हमें भक्ति का अनुसरण करना है, जिससे हम सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सके और आध्यात्मिक इच्छा प्राप्त कर सके. आध्यात्मिक इच्छा से replace. आध्यात्मिक इच्छा से उसे बदल सके. Just like we have desire for eating. It is a material desire. But you can change it into a spiritual desire. Instead of simply desire for eating, you desire to take prasadam. Automatically, your desire for eating is also satisfied. And it is not a material desire. To eat prasadam is not a material desire. It's a spiritual desire. So जैसे हमारे अंदर खाने की इच्छा है, so ये खाने की इच्छा एक भौतिक इच्छा है, किंतु यदि हम इसे प्रसाद खाने की इच्छा से बदलें, तो हमारे साथ ही साथ खाने की इच्छा भी तृप्त होगी और प्रसाद का सेवन करना ये कोई भौतिक इच्छा नहीं है, ये आध्यात्मिक इच्छा है. So your eating becomes spiritualized. At the same time, you don't have to stop eating completely, which is not possible. At the same time, the desire for eating nice things, that also don't have to give up. Don't have to give it up. You see, these dry philosophers, they say, this tongue has to be controlled, you should stop eating all nice food. Satvik bhojan, satvik ahar. I had gone to one ashram before coming to Krishna Consciousness. Satvik ahar khate hain, kya khate hain? So I went for their satvik ahar. Some plain rice, dal is cooked, not even salt is there in that dal. How can I eat that every day? I heard those sadhus are eating every day rice, dal, boiled sabji. One sabji only, and that also totally bland. How can we eat this every day and manage? So प्रसाद सेवन करने से हमारा जो भोजन है, हमारा आहार वो भी दिव्य हो जाता है और हमें अपने खाने की इच्छा को शून्य करने की आवश्यकता नहीं और साथ ही साथ हम कुछ अच्छा पसंदीदा खाना चाहें तो वो भी भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं. कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो जिह्वा पर नियंत्रण पाने के लिए कहते हैं कि आपको एकदम सात्विक आहार खाना चाहिए. सो महाराज जी एक बार एक आश्रम में गए थे इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले. सो वहां पर उन्होंने जाके देखा कि जो भोजन खा रहे थे वो एकदम सादा चावल और उसमें दाल थी जिसमें नमक भी नहीं था और एक प्रकार की एकदम सादी उबली हुई सब्जी थी. सो किसी के लिए ये इस तरह से प्रतिदिन खा पाना कैसे संभव है, इस पर निर्भर रहना कैसे संभव है? So all spiritual practice other than bhakti is like eating this bland food. Please remember this. Always remember this. So, भक्ति के समय से सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये एकदम इस तरह का अस्वादिष्ट भोजन खाने के जैसा है. So bhakti is so nice and we are so fortunate that we are practicing spiritual life which is very, very, very attractive. Because Krishna is attractive, all attractive. He attracts in millions of ways, all of us. So you understand the difference between Krishna consciousness and other types of spiritual practice.
बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत सरल है और ये आकर्षक है क्योंकि भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक हैं। सो भगवान कृष्ण अलग अलग माध्यमों से हमें आकर्षित करते हैं और बहुत रुचिकर है। सो हम समझ सकते हैं कि भक्ति और जो अन्य विधियां हैं इनमें क्या अंतर है। Like all other processes of spiritual life, they try to hear, I am Brahman, I am deathless, I am pure spirit, I am not matter, I am not earth, I am not fire. When I was small, I was learning these sutras. Na bhumim, na tejo, na vayu, na kham, nendriyam va. All, not this, not that. What is Brahman? What is soul? What is the reality? Not earth, not fire, not this. It's so dry. Instead, we hear about Krishna, full of all kinds of wonderful qualities, wonderful activities, wonderful beauty. That is so much more interesting than hearing that you are soul, you are not the earth, you are not water, you are not matter, you are not this, you are not that. जो अन्य मार्ग है वो आत्मा के ऊपर केंद्रित होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं मरता नहीं, मैं जलता नहीं, इत्यादि इत्यादि। सो महाराज जी बताते जब वे पढ़ते थे, मतलब बचपन में पढ़ते थे, तो उनको इस तरह से सिखाया जाता था कि आत्मा जो है ये जलता नहीं, मरता नहीं, इस तरह से आत्मा ये नहीं है, वो नहीं है। ये बहुत ही शुष्क साहित्य, शुष्क ज्ञान, शुष्क दर्शन है। किंतु इसके विपरीत यदि हम देखें कि भगवान कृष्ण जो है अद्भुत और दिव्य गुणों से संपन्न है, संपूर्ण है, सो ये बहुत आकर्षक है, बहुत लुभावना है। So everything in bhakti is attractive because of Krishna. Everything is centered around Krishna. Krishna is all attractive. So bhakti is the most attractive. Please remember this. So भक्ति में सब कुछ बहुत आकर्षक है क्योंकि भगवान कृष्ण की वजह से है। भगवान कृष्ण ही इसके केंद्र हैं और भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, इसलिए वे सब कुछ आकर्षक बना देते हैं। So then the question will arise, why should we struggle to chant? Why is chanting not very attractive for me? If Krishna is very attractive, Krishna is non-different from his holy name, why is Krishna or chanting Krishna in the form of holy name, when we chant, why is he not attractive for me now? So प्रश्न उठ सकता है कि हमें जप करने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? जब भगवान कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है और भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, so हमें नाम जप में आकर्षण क्यों नहीं होता? हम इतना परिश्रम क्यों करते हैं उसके लिए? So for this, Sri Rupa Goswami gives a simple example. Everyone knows sugar is very sweet. Sugar candy is very sweet. But a jaundice patient, when the jaundice patient eats sugar candy, it's bitter, it's not sweet. तो श्री रूप गोस्वामी समझाने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं कि सब लोग जानते हैं कि मिश्री बहुत मीठी होती है, किंतु जो पीलिया का रोगी है वो अगर मिश्री खाएगा तो उसे मीठी नहीं, उसे कड़वी लगेगी। So this sugar candy is the cure for jaundice. And gradually, as the disease becomes cured, that same person, patient who was tasting sugar candy as bitter, will become free from this jaundice and also begin to taste sugar candy as very sweet. So इस पीलिया का इलाज मिश्री से ही होता है और जब वो मरीज, पीलिया का मरीज मिश्री खाता है, तो धीरे-धीरे उसका ये जो पीलिया का रोग है वो ठीक होता है और उससे ये मिश्री जो पहले कड़वी महसूस होती थी और उसे मीठी लगने लगती है। Similarly, in the beginning when we chant Hare Krishna, as long as we are afflicted with this disease called Bhava Roga, this chanting will not be tasting very sweet. But still take it as a medicine because it's going to cure your Bhava Roga, and then when you're cured, you will get the sweet, natural taste of Hare Krishna. प्रारंभ में जब हम हरे कृष्णा जप करते हैं तो हमें ये बहुत मधुर नहीं लगता है क्योंकि हम भवरोग से ग्रस्त हैं, किंतु फिर भी हमें इसे एक औषधि के रूप में लेना चाहिए और इसका जप करते करते हम इस भवरोग से मुक्त होंगे और हमें इसकी मिठास अनुभव होने लगेगी। So this taking this medicine, just like doctor administers the medicine expertly. Supposing somebody is having vomiting, and then if the doctor gives one tablet, the tablet itself the person will vomit. So much vomiting.
So very tablet which is supposed to go inside and cure, that itself the patient is vomiting. So then how will he become cured? By taking that vomiting tablet or medicine. So then doctor will administer intravenous. उसके लिए अस्पताल जाना पड़ेगा. Correct? So similarly, our condition is so acute that we are not even able to take the medicine of Hare Krishna. It doesn't go inside. Even if we produce that medicine by chanting the sound, that's not going inside. अंदर नहीं जा रहा है. So for that one acute condition, some treatment is there. So ये जो चिकित्सा है ये बहुत ही जो डॉक्टर है बहुत ही दक्षता के साथ करते हैं. मान लीजिए किसी को उल्टी की बीमारी है, तो अगर उसके उपचार के लिए उसे दवाई दी जाए, गोली दी जाए, सो वो गोली खाएगा तो उसको भी उल्टी कर देगा. जो गोली अंदर जाकर उसका रोग ठीक करना चाहिए वो अंदर नहीं रहेगी और उल्टी वापस आ जाएगी, तो उसका रोग किस तरह ठीक होगा? तो उसके लिए फिर उसे अस्पताल जाना पड़ेगा और वहां पर सलाइन या ड्रिप लगाना पड़ेगा, तब उसका उपचार होगा. Similarly, what is this intravenous treatment that we require now, that we are not taking inside? You see, that's why in the scriptures it is written that our chanting is full of offenses. So you have to understand what is this offense, which is blocking that medicine to go inside and work. Harinama Aushadhi, Bhavaushada. In the Bhagavatam, 10th canto, 1st chapter, 4th verse. Nivritta tarshai rupagiyamanat bhavaushada shotra manobhiramat. So who can actually take this medicine and actually become cured, and after becoming cured can taste the nectar of chanting Hare Krishna, the sweet taste? It says Nivritta tarshai. जब करते हैं तो हमें इसका प्रभाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भी औषधि है, सो वो क्या चीज है जो इसको रोक रही है? वो है हमारे अपराध. तो भागवत में बताया गया है कि जब हम निवृत्त तर्षय हो जाएंगे तब हम इसका प्रभाव देख सकेंगे. So what is this nivritta tarshaya? Become free from all material desires. So ये निवृत्त तर्षय का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाना. By material desires I mean material desires for enjoyment will no longer be attractive for you. When you develop attraction for Krishna in any way. So भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने का अर्थ है कि हमको भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का कोई आकर्षण नहीं रहेगा जब हम भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएंगे. So in one chapter in the Chaitanya Charitamrita, which if you are reading Chaitanya Charitamrita, you can read, please do read. 61 explanations of the Atma Rama verse is the 24th chapter in the Madhya Leela of Chaitanya Charitamrita. So there, Sri Chaitanya Mahaprabhu is trying to teach us Krishna can attract us in millions of ways. And he's telling just 61 ways how he attracts. He is described by giving meaning to one verse in the Bhagavad. चैतन्य चरितामृत में आत्माराम वर्ष के आत्माराम श्लोक जो है भागवतम का उसकी व्याख्या की है. तो उसमें चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि भगवान कृष्ण हमें लाखों करोड़ों तरीकों से आकर्षित कर सकते हैं और इस चैतन्य चरितामृत में उन्होंने 61 तरीके ऐसे बताए हैं जिससे भगवान आकर्षित करते हैं. Just to give a sample. So when you are chanting Hare Krishna, chanting may not be the way you get attracted to Krishna. Right now, you're not able to get attracted to Krishna. So we'll say also, please take prasadam. Don't eat ordinary food along with chanting Hare Krishna. We'll also say, hear Bhagavatam or read Bhagavad Gita or associate with devotees or worship Krishna. So we will tell so many different things in addition to chanting Hare Krishna Japa. जब हम हरे कृष्ण जप करते हैं तो हमें हरे कृष्ण जप के माध्यम से कृष्ण के प्रति आकर्षण महसूस ना हो तो भी बताया जाता है कि आप प्रसाद लीजिए, प्रसाद
भगवान का प्रसाद भगवान से अभिन्न है, तो ये भी हमें आकर्षित करता है। भक्तों का संग, भगवान की अर्चना विधि, भागवतम का श्रवण, ये सारे अलग अलग विधियां हैं जिससे हम भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। So, which is that particular attraction which will make you captivated, that all other attractions you will completely lose. This we have to find out. So, वो कौन सा आकर्षण है जो हमें ग्रस्त कर ले और फिर हम बाकी के सारे आकर्षण भूल जाएं, इसकी हमें खोज करनी है। Just like a boy has to marry a girl, which girl can attract him so powerfully that no other girl will have that kind of qualities or beauty which can attract this boy anymore. So, जैसे लड़के को शादी करनी है तो ऐसी लड़की खोजता है कि जिसमें वो आकर्षण है कि वो अन्य किसी लड़की में वो आकर्षण या वो गुण ना पाए, सिर्फ किसी के प्रति आकर्षित रहे। This is explained in the Bhagavatam, 8th canto. When Lakshmi appeared out of the churning of the milk ocean, she appeared as a Kanya, marriageable age girl, not married, she is not yet married. So all the Devatas, the Kinnaras, the Kimpurushas, the Vidyadharas, the Siddhas, all of them tried to approach her. Oh, I want to marry you, I want to marry you, I've got this quality, I've got that quality. But she was examining that yes, they have some good qualities, but nobody has all the good qualities that Vishnu has. So she went and directly married Vishnu. So भागवत में बताया गया है कि जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, तो उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, वह कन्या के रूप में थी। सो उनको देखकर सभी देवता, किन्नर, किमपुरुष इत्यादि ये सब आकर्षित हुए और वे अपने आप को उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे कि हमारे अंदर ये गुण हैं, ये खूबियां हैं। सो उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने देखा कि इनके अंदर वास्तव में कोई ना कोई खूबी है, लेकिन केवल भगवान विष्णु हैं जिनके अंदर सारे गुण हैं, सारी खूबियां हैं। सो उन्होंने जाकर फिर उनसे विवाह किया। Similarly, we should understand that so many attractions are there in this material world, but none of them can really satisfy me and make me completely happy. Fully satisfied and completely happy. Only Krishna can make me fully satisfied and completely happy, and he can flood my heart with unlimited happiness and unlimited satisfaction. So संसार में बहुत सारे आकर्षण हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए कि इनमें से कोई भी हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं कर सकता। केवल भगवान कृष्ण ही हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट और प्रसन्न कर सकते हैं। वे हमारे हृदय को आनंद से सराबोर कर सकते हैं। So Krishna says this in the Bhagavad Gita. Macchitta, madgata prana, bodhayanta parasparam, kathayantascha mam nityam, tushyanti cha ramanti cha. Everybody is, Prabhupada says, everybody is looking for this tushyanti ramanti, for satisfaction and happiness. Where is this available? In an unlimited quantity. So it can fully flood our heart, and then we will lose attraction for everything material, which is giving something like very, very, very little, insignificant amount of happiness or satisfaction. So भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि भक्तजन जब हम तुष्यन्ति रमन्ति करते हैं, तुष्यन्ति रमन्ति का अर्थ है कि संतुष्ट होना। सो प्रभुपाद बोलते हैं हर कोई इस तुष्यन्ति रमन्ति संतोष की तलाश में है। सो वो हमें कहाँ उपलब्ध होगा? सो वो हमें भगवान कृष्ण से ही उपलब्ध होगा, क्योंकि वही हमारे हृदय को पूरी तरह से सराबोर कर सकते हैं इस संतुष्टि और आनंद से। So now our condition is such that chanting alone may not work to immediately give us that attraction, or taking prasadam alone may not work. So we have to do as many activities in Krishna consciousness that involve our body, that is our senses, our words and our mind. We act in three ways: through body or senses, through words and through mind. So Srila Rupa Goswami has expertly given us all varieties of activities which will completely cover the range of activities we perform with our senses, our body, kaya, vacha, manasa. He has given us that
in form of 64 principles of sadhana bhakti. So अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम केवल जप करने से पूर्ण संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकते, या केवल प्रसाद लेने से हमको उसका आकर्षण नहीं, पूर्ण आकर्षण नहीं है. So हमें अधिकाधिक भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए, और हमें अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से जितने भी हो सके ऐसा संभव कार्यों में लगना चाहिए. श्री रूप गोस्वामी ने हमें 64 प्रकार के इस प्रकार कार्य दिए हैं जिससे हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं. See how expert Rupa Goswami is. The science of Bhakti Yoga is explaining that naturally in this material world we perform different kinds of activities desiring that material activities will give me that satisfaction, that happiness which I am looking for. But actually can only get it from Krishna. And how to perform activities in Krishna consciousness or devotional service. Varieties of activities involving all our actions of the body, mind and words. That is what he is describing in sadhana bhakti. So Sri Rupa Goswami बहुत दक्षता से इसका वर्णन करते हैं. हम सोचते हैं कि हम भौतिक कार्य करेंगे और हमें इनसे संतोष मिलेगा, किंतु ये संभव नहीं है. सो हमारे सारे कार्य जो शरीर से, वाणी से, मन से होते हैं, इन सबको, इन सारे कार्यों के लिए उन्होंने 64 principles of sadhana bhakti बताया. 64 सिद्धांत दिए हैं साधना भक्ति के. So you please now become serious about knowing what these 64 activities are. You are already doing some of them. But because you are not developing the attraction for Krishna through whatever you are doing now, try to include more and more activities. It's not difficult. Just you have to make little adjustment in your day-to-day life. So you make that adjustment, try to include as many activities as possible. One of those activities will definitely attract you to Krishna so strongly that you will become completely mad after Krishna, in a sense. So अभी हमें और गंभीरता से जानना चाहिए कि 64 जो सिद्धांत हैं भक्ति के क्या हैं. हम अभी भी उनमें से कुछ का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा आकर्षण जो है वो भगवान के प्रति तीव्र नहीं है. सो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम 64 में से अधिकाधिक जो सिद्धांत है या कार्य है उन्हें अपने दिनचर्या में सम्मिलित करें, और इसके लिए हमें थोड़ा सा व्यवस्था करनी चाहिए. और जब हम इस तरह से इनको अपनाना शुरू करेंगे तो इनमें से कोई एक ऐसा सिद्धांत या एक ऐसा भक्ति का सिद्धांत होगा जो हमें पूर्ण रूप से आकर्षित कर लेगा, और हम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमवश पागल हो जाएंगे. So all of you have now understood what is the secret to developing that taste, that attraction for bhakti. Otherwise, how long will you keep on chanting somehow chant, somehow chant, somehow chant, somehow chant? How long we can do it? So we have to develop the taste, we have to develop the attraction, we have to become nicely fixed up. Very easy when there is natural attraction, natural taste. So अभी हम समझ पा रहे हैं कि ये आकर्षण विकसित करने का रहस्य क्या है. अन्यथा हम कब तक सिर्फ जप करने के भाव से जप करते रहेंगे. किंतु एक समय ऐसा है कि जब हमें आकर्षण विकसित करना पड़ेगा और हमारे अंदर जो स्वाभाविक रुचि है वो जागृत हो. Any questions? Can you pass on the mic? You can ask a question in the mic. One more mic. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. हम सब जब मंदिर आते हैं, मेरा प्रश्न ये, लेकिन हो सकता है किसी और के मन में चल रहा हो. जब मंदिर आते हैं तब सारी चीजें डेवलप होती है कि 64 क्वालिटी हम डेवलप करें और कृष्ण के प्रति आकर्षण डेवलप करें. लेकिन जैसे ही हम सामाजिक जीवन में भी, ये जो बाहर रहते हैं, गृहस्थ हैं, तो एक सामाजिक जीवन भी है हमारा. तो जब उस समाज के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं या उनके साथ भी रहना है, मतलब हमको समाज के साथ भी, तो उन दोनों के बीच में हम तालमेल नहीं बिठा पाते हैं उस समय. तब मतलब तुरंत हमको पता चल जाता है, नेक्स्ट डे पता चल जाता है कि आज हमारा जबकि पार्टी कैसी रही. अगर हम एक दिन सामाजिक लोगों के साथ व्यतीत कर रहे हैं और दूसरे दिन हम टेम्पल में आके जब कर रहे हैं और उसका पर, तो हमको सामने ही पता दिख जाता है कि हमारी जबकि पार्टी कैसी है. तो लेकिन अब सामाजिक जीवन में भी जीना है, यहाँ भी रहना है, तो उन दोनों के बीच में हम सामंजस्य कैसे बिठाएं? So Bhagavatam is the answer for this question.
Bhagavatam says how people from different backgrounds took up bhakti and became first-class devotees. Somebody might be a king, somebody might be a merchant, somebody might be a Shudra, doing some very, very ordinary menial work. Somebody might be a very, very learned scholar, or he might be totally ignorant. Somebody might be very sinful like Ajamila. But bhakti works that it will actually... So the art of practicing devotional service while living in the material world, while doing our duties, we have to learn from Prabhupada. That's why please study, read, hear Prabhupada's biography. That's the only solution. Of course, Bhagavatam is also biography of great devotees, but we cannot connect or relate with that because that is some millions of years back or thousands of years back. Prabhupada lived contemporary life. He was born in Calcutta. He was studying in a college like we studied in college. He was working in some job or doing some business, pharmacy business. So amidst all that, how was Prabhupada perfectly executing bhakti? We have to learn that from him. So, ये प्रश्न का उत्तर है कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि किस प्रकार अलग अलग प्रकार के लोगों ने भगवान की भक्ति का अनुसरण किया. कोई विद्वान था, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई तुच्छ कार्य कर रहा था, कोई अज्ञानी था, कोई अजामिल जैसा पापी व्यक्ति भी था. सो हम इनके जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें श्री प्रभुपाद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से प्रभुपाद ने अपने जीवन को इस तरह से ढाला कि वे दोनों चीजें कर सके. भागवतम में जो उदाहरण है वो हजारों लाखों वर्षों पूर्व है, सो हम उनसे संबंध स्थापित करना थोड़ा कठिन पा सकते हैं. किंतु प्रभुपाद ने तो वर्तमान काल में ही अपने जीवन यापन किया है और उन्होंने अपने उदाहरण से हमें प्रस्तुत किया है. इसलिए हमें बहुत गंभीरता से श्री प्रभुपाद के जीवनी को पढ़ना चाहिए और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए. Like I'll give you one practical example in Prabhupada's life. Prabhupada was very busy with so many duties when he was a householder. So when would he chant his 16 rounds? Prabhupada said, morning he would get up and he could chant 4 rounds. Apart from doing deity worship and so many other things. Then after breakfast, 4 rounds. After lunch, 4 rounds. After dinner, 4 rounds. This is the way he used to chant 16 rounds every day amidst his busy schedule. So प्रभुपाद अपने व्यस्त जीवन में थे तो वे बहुत सारे कार्यक्रमों में व्यस्त रहते थे. So प्रभुपाद ने प्रत्यक्ष उदाहरण से दिखाया कि कैसे वो जप करते थे. जब वो प्रातः उठते थे तो वो 4 माला करते थे, फिर अपने ब्रेकफास्ट पे 4 माला, फिर दोपहर के भोजन के बाद 4 माला और रात के भोजन के बाद फिर से 4 माला करते थे. So इस तरह से प्रभुपाद अपना जप. See how Prabhupada is adjusting to do all his duties at the same time chant 16 rounds. So he's taught by his example. Now you don't have to necessarily do the way Prabhupada did. You also have to make adjustment that you divide. If you can't chant at one stretch, you divide according to time available. तो श्री प्रभुपाद ने दिखाया कि उन्होंने किस तरह व्यवस्था की कि वे अपने 16 माला पूर्ण कर सकें. आवश्यक नहीं है कि हमें प्रभुपाद के जैसे ही करना है, किंतु हमें भी अपने अनुसार अपनी व्यवस्था करनी है, उस तरह से विभाजन करना है कि हम अपने निर्धारित 16 माला पूर्ण कर सकें. This is just one example. Like that, so many examples are there. You read Prabhupada's biography in detail. Now, many biographies are available, written by different devotees. So, it describes Prabhupada's life and Prabhupada's activities. So, we learn a lot from studying this Prabhupada's biography. So, ये एक उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं. So, हमें बहुत गंभीरता से श्री प्रभुपाद की जीवनी पढ़नी चाहिए और बहुत सारे भक्तों ने श्री प्रभुपाद के जीवन, उनके कार्यों के विषय में लिखा है. तो जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हम उनसे बहुत सी शिक्षा ले सकते हैं. Next question. ये माइक में बोले. अच्छा, माइक इज नॉट वर्किंग. हरे कृष्ण महाराज. भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास 4 प्रकार के लोग आते हैं, जिन्हें धन की इच्छा है, जो दुखी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि साधन भक्ति करने के पश्चात भी लोग काफी दुखी रहते हैं. ऐसा क्यों? The very definition of bhakti is
devotional service is rendered not for any material benefit. The very definition of bhakti is that. So though somebody may approach Krishna, if they are pious, because they want relief from some material distress or they want some wealth because they are poverty stricken, but actually bhakti should not be performed for material gain or for some material relief. No. Bhakti should be performed simply for the sake of pleasing Krishna under all circumstances. So when somebody performs bhakti for sake of getting relief, if he does not get relief, it is an opportunity for him to think, then what is the benefit of doing bhakti? Why am I doing bhakti if I am not getting relief? So then Krishna will help him understand that bhakti is not meant for giving you some temporary relief now. Bhakti is meant for giving you permanent solution to all your problems when you actually progress in Krishna consciousness and go to Krishna. That is awaiting you. Just like, to give an example. Okay, first explain this, then I'll give the example. So bhakti की परिभाषा ये है कि वो किसी भौतिक उद्देश्य से नहीं की जाती है. यदि कोई अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान के पास आता है और उसके आदमी पाता है कि उसके कष्ट निवारण नहीं हो रहे, तो ये भक्ति का मूल उद्देश्य नहीं है. भक्ति केवल भगवान की संतुष्टि के लिए की जानी चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए की जानी चाहिए. तो यदि किसी कोई दुखी है और उसके वो भगवान के समक्ष आता है और उसके दुख फिर भी निवारण नहीं होते, सो भगवान उससे मौका देते हैं ये समझने के लिए कि भगवान के शरण में आकर उसके शाश्वत दुख नष्ट होंगे, केवल उसको इस तरह से क्षणभंगुर रिलीफ नहीं मिलेगा, समाधान नहीं मिलेगा, उसको शाश्वत समाधान मिलेगा सभी प्रकार के दुखों से. So scriptures give an example for that. Supposing you're traveling by train, of course nowadays people don't travel by train, they go by flight. You're traveling in a train and it takes 24 hours to reach some destination which is far off. Now in the train, you try to make yourself comfortable as far as possible, but let us say some problem is there. Now that you have very limited resources to actually get relief. Some problem is there in the train while traveling. So, but at the back of your mind, you know, the train is moving towards my destination. Once I reach my home, easily I can solve this problem. I have to bear with it. If I can't solve the problem immediately, I have to bear with it till I reach my home. So your attention will become, I want to reach home, I want to reach home, I want to reach home. Till then, let me tolerate. Similarly, while we are in the material world, some problem or other, some difficulty may be there. Whether that difficulty can be solved immediately or it may take some time, or if it doesn't get solved even throughout life, some chronic problem. But all this will be finished if I do bhakti for the sake of pleasing Krishna, and Krishna will take me back to his personal abode where there is no misery. So we should be looking forward for going back to Krishna rather than looking at some particular problem, this is solved, that's not solved, what is the solution for this material solution? No. This is not our business. Intelligent person always thinks, I'm traveling in a train which is taking me to my destination, my home. Therefore Prabhupada says, let us go back home, back to God.